Morning, everyone. Now, your English teacher is back again with the explanation of The Lost Child by Mulk. And here I am going to explain you part 2. Dear students, I hope you would have read the part which I have explained previously. So, here, moving ahead. So the line goes, a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. तो जो बच्चा जो आगे बढ़ता है, तो what he saw a man who is standing over there and he is holding a pole with yellow, red, green, purple balloons. हम कह सकते हैं गुब्बारे वाला वहाँ खड़ा हुआ है. The child was simply carried away. So child was attracted towards the balloons. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. मीन्स चाइल्ड जो होता है बच्चा जो होता है ही वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कलर ऑफ बैलून्स और वो उनका खिंचा चला जाता है बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज सो ही वॉकड ऑन फार्दर. उसे पता था कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, भाई बहुत बड़े हो गए हो, अब क्या उम्र है बैलून से खेलने की, और वो आगे चल देता है. एज सुन एज ही मूव्ड अवे ही सॉ अ स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर मीन्स सपेरा. स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, जो अपनी बीन बजा रहा है स्नेक के सामने, while coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck itself in a basket. Sorry, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. हंस की तरह उसकी एक गर्दन की तरह बाहर निकला हुआ है. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. तो जो म्यूजिक होता है वो ठीक वैसे ही फील होता है जैसे कि हमें एक वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई पड़ रही है बट वो दिख नहीं रहा है. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. There was a roundabout in full swing. वहाँ पे एक झूला था गोल वाला, खूब तेज चल रहा था, घूम रहा था. Man, woman and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. तो वहाँ पे मैन वुमैन खेल रहे थे, वहाँ झूल रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे मस्ती में. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. अभी तक जो बच्चा हर विश को रोक रहा था लेकिन राउंड अबाउट की विश को रोक नहीं पाया, पेरेंट्स से कहता है मुझे चढ़ना है उस पर. There was no reply. He turned to look at his parents. उसने वापस अपने पेरेंट्स को देखा. They were not there. लेकिन वो वहाँ नहीं थे. Ahead of him. He turned to look on either side. उसने इधर देखा उधर देखा. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. वो वहाँ नहीं थे, कोई साइन नहीं था. फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट. उसका गला सूख गया और एक केज से चीख निकली. एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर. और वहाँ से वो बहुत तेजी से भागा, जर्क के साथ, झटके के साथ. और तब जो फियर था वो रियल फियर था. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स. आंसू आ गए उसकी आंखों से. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर. पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट एंड टू द अदर. परेशान होता हुआ कभी इधर कभी उधर भाग रहा था. एंड चीख रहा था. ही वॉज शाउटिंग मदर फादर ओनली दीज टू वर्ड्स. ही वेल्ड. हिज येलो टर्बन, जो वो टर्बन पहना हुआ था, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी. उसकी पगड़ी खुल गई जो बांधा हुआ था और कपड़े मिट्टी में धूल में सन गए. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल ही स्टूड डिफीटेड. यहाँ पे डिफीटेड का मतलब है वो अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पाया. हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स. उसकी जो चीख थी वो सॉब्स में, सुबकने में बदल गई. एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज. फिल्मी मतलब जिसमें आंसू आए हुए थे. मैन एंड वुमेन टॉकिंग. ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स. उसने देखने की कोशिश की बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. जो हंस रहे थे, बोल रहे थे, सिर्फ शायद मस्ती करने ही आए थे वो मेले में. He ran quickly again, this time to a shrine. Shrine means एक मंदिर, temple we can say, to which people seemed to be crowding. Every little inch of his space here was congested with men, but he ran through people's legs. यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह भी नहीं थी, लेकिन वो भागा चीखते हुए मदर फादर. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. क्राउड बहुत ज़्यादा थी. मैन जॉसल्ड ईच अदर, आपस में लगे हुए थे लोग. हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज. यहाँ पे मर्डरस आइज का मतलब है गुस्से में, एनर्जेटिक. एंड हैफ्टी शोल्डर्स. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट. उस बच्चे ने कोशिश की एंड ही मेड अ वे बिटवीन द फीट बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. लेकिन कभी इधर कभी उधर हो जाया करता था. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट. ट्रैम्पल कुचल दिया जाना, वो कुचल दिया जाता. हैड ही नॉट श्रीक्ड द हाईएस्ट pitch of his voice. वो चीखा नहीं होता. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry.
and stooping with great difficulty, stooping with chukna, lifted him up in his arms. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly, बच्चा और रोने लगा. Then ever now and only cried, I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him. मैंने उसको शांत करने की कोशिश की by taking him to roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my father, I want my mother. बच्चे को आप वो सब चीज़ें जो अच्छी लग रही थी वो अब उसे विदाउट अट्रैक्शन फील हो रही थी और उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, मदर, फादर. द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड. अब जो मैन था जिसने उस बच्चे को उठाया हुआ था, व्हाट ही डिड, ही टुक द मैन टूवर्ड्स द प्लेस वेयर स्नेक चार्मर वाज देयर हु वाज प्लेइंग द फ्लूट टू द स्विंग, यानी कि नाचते हुए कोबरा की तरफ. लेकिन सी कि वॉट एवर थिंग्स जो अट्रैक्ट कर रही थी परेशान कर रही हैं उसे. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स. लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए दोनों हाथों से. शट हिज ईयर्स फ्रॉम बाई बोथ हिज आईज. क्योंकि उसे अभी वो गाना नहीं सुनना था, म्यूजिक नहीं सुनना था. ही सेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. नाउ आफ्टर दिस द पर्सन टुक हिम to the place where the man was standing with the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten them. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. उसने पूछा क्या balloon चाहिए? The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. I want my mother, I want my father. Again he said the same thing. The man is still trying to make the child happy. The man is still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers, child? But child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father, thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets. The man took him to the counter of sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. This was the explanation of the story, The Lost Child, written by Mulk Anand. Hope you all would have understood everything. Thank you.